welcome to Circle of Clarity. A standard disclaimer before we start. Everything discussed in this session is purely for educational purposes. Because I want to make things practical, it's very important for me to take real life company names, examples, right? But it is in no way a buy or sell recommendation at all. It's your hard-earned money. You have to obviously research before putting any amount of your money. Don't trust any random person. Yes. Okay. About me, hi for everyone who don't know, my name is Neel Randeria. I am a chartered accountant and I'm done with my first two levels of CFA. What do I do professionally? My work ex. I am a practicing CA. We have our office in Goregaon in Mumbai itself. We do routine return filing, GST audit services. Along with that, there are two niche that we have been doing lately. One is virtual CFO services. We help medium to large companies become their virtual CFOs. Along with that, we also advise startups for the valuation, structuring, etc. Along with that, second thing that I've been doing is coaching CFA students and taking lectures on finance, investing, etc. And the third one is a bit recent. I've been helping and also learning along the journey of making equity research reports, helping management interactions, etc. So that's it from my side. And we will now start discussing what we have met for. Yes, the ROE illusion, DuPont analysis, super interesting topic. Yes, not a very difficult one to understand, but I have planned something that you will be able to implement this, whatever we'll be learning in a very simple way. So let's start without any delay. The ROE illusion DuPont analysis. We shouldn't start this session at all without this quote from Charlie Munger, which I keep reminding myself whenever I get lost in the journey of investing. So I'll read out this for all of you. What is Charlie saying over here is that over the long term, it's hard for a stock to earn a much better return than the business which underlies it earns. Yes, so if the business earns 6% on equity over 40 years and you hold it for that 40 years, you're not going to do much better than a 6%, even if you originally bought it at a discount. So, a lot of people always debate, "Kya right now the stock is available at a huge discount, so let me just get into it. Sasta mil raha hai to best hi hoga." Even though you get into a sasta stock, if the return on equity over a very long horizon is a specific percentage, that will be your return on that stock over that period of time. Correct? So return on equity becomes the बाप of all ratios, so to say, because बहुत important हो जाता है. ठीक है? So I hope let's start our discussion with this quote because I feel no ROE discussion is complete without this quote. Obviously, we'll have a very structured approach as the name of our club is Circle of Clarity. So let's have utmost clarity as to what we'll be discussing. Yes. So the index is on a screen. There are five things that we'll be discussing in today's session. First, let's understand what is return on equity. Yes, because I can't assume that every one of us is from a CFA, CA background. So we'll quickly rush through what is return on equity in a super simple way. Second, how does DuPont help us understand things? Third, once we have understood the first two parts, we'll get into the case studies part. Okay, so we'll understand as to how do we apply whatever we have learned into real life companies. Fourth, how can you practically use this ROE and DuPont ka logic in all the companies that you've been investing? So fourth one, I will give you a very to the point prompt. Okay, so even if you forget what we have been discussing today's session, still if you have that prompt with you, trust me, all of your tension should be relieved because you will be able to have a quick DuPont check on any company you want to invest. Correct. And the fifth one is there is always a lot of confusion around what is ROCE, what is ROE, what is ROIC, and what is ROIC. Yes, it will be a very, very good, comparison between what all these ratios are. So let's start. A lot of things to be discussed. First one is return on equity. The formula is on your screen. Yes, return on equity is very simple. It tells us how efficiently the company is using shareholders' funds. How efficiently is the company using shareholders' funds? And why is this the case? Because you have equity in the denominator.
अब this ROE का formula, so to say, is just a derivation of the return on investment का formula. What is ROI? Return on investment. कोई भी चीज में हम ROI कैलकुलेट कर सकते हैं. मैंने 100 रुपया डाला, it became 110, my 100 became 110, 100 को 110 हो गए. So what is my investment? 100. So that is in the denominator. How much is my return on that? 10. So 10 is in the numerator. 10 upon 100, 10%. So my return on investment is 10%. As simple as that. So return on equity is also very simple. The return on equity. So what is the equity? Equity is the investment. Equity is the money of shareholders used by the company. कंपनी के पास शेयरहोल्डर्स का कितना पैसा है? इट इज नॉट जस्ट शेयर कैपिटल बट ऑल्सो रिजर्व्स. बट रिजर्व्स इज ऑल्सो मनी ऑफ शेयर होल्डर्स विद द कंपनी. करेक्ट. सो इक्विटी बहुत सिंपल है. शेयर होल्डर का पैसा जो कंपनी के पास पड़ा है, दैट इज इक्विटी. Net profit after tax क्या? It is the money earned by the company for the shareholders. So revenue is what the company earns. Revenue जो company कमाता है, minus all the expenses, minus interest also, minus tax also paid to the government. What is left is the money that belongs to the shareholder का. Shareholder का पैसा है net profit after tax. So return on equity is quite intuitive. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी. ये डिनोमिनेटर में शेयर होल्डर का पैसा है, हाउ मच मनी ऑफ शेयर होल्डर्स विद द कंपनी, और इसको यूज करके कंपनी ने कितना कमा के दिया शेयर होल्डर को, इज एनपैट. दिस इज द मनी दैट शेयर होल्डर्स हैव पुट इन. यस, इतना पैसा है शेयर होल्डर का कंपनी में, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, दिस इज इक्विटी. उसको यूज करके कंपनी ने कितना कमा के दिया शेयर होल्डर को, इज इन द न्यूमरेटर. सो इट बेसिकली टेल्स यू हाउ एफिशिएंट द कंपनी इज इन यूजिंग शेयर होल्डर का पैसा. करेक्ट. इसको थोड़ा और अगर हमें इजीली डिड्यूस करना है, इफ यू वांट टू रिड्यूस इट इन अ सिंपलर वे, if ROE of a company is 10%, it means for every 100 rupees of shareholder money, company earns 10 rupees for its shareholders. So you understood the formula, you understood the logic behind it. Correct. Now a thumb rule: generally a company having an ROE of 15% or more is considered good. यस. सो एज अ थंब रूल, ऑब्वियसली थोड़े इंडस्ट्री में आरओई कम होगा, थोड़े इंडस्ट्री में ज्यादा होगा, बट डजंट मैटर. एज एन इन्वेस्टर यू शुड ऑलवेज want a return on equity of 15% or more. That is considered very good. Okay, quite good. So what all we have discussed: ROE the formula, the meaning, and a thumb rule for that. I would like you guys to answer from the limited discussion that we have had. Guys, what do you think? ROE is generally higher the better or lower the better? As an investor, what do you want? Higher the better. Higher. Higher the better. Higher the better. Stable. Absolutely. It is higher the better. Yes. So it is always higher the better. Perfect. So let's discuss a small node. Okay, what happens if the ROE of a company's, so let's reverse the thing. We understood as an investor, ROE should be 15% or more. But what does it interpret if a company has a low ROE? Guys, एक company है जिसका return on equity is less than 10%. What does it mean? The shareholders would want the company to pay out all the earnings or as dividends so they can invest the money elsewhere. अगर एक कंपनी जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी जस्ट 3 to 4%, 3-4% है रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का, तो मैं क्या बोलूंगा एज ए शेयर होल्डर, तू मुझे पैसा दे दे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे, मैं उसको एफडी में डाल देता. Why am I taking such high risk to get 3 to 4% return on my money? Yes. So if the ROE is Yes. very less, as a shareholder, I would want the company to pay more dividends. But on the other hand, when the return on equity is higher, shareholders would not mind if the company doesn't pay dividends and reinvests the profit in the business. तो एक हम मेंटल मॉडल बना सकते हैं that if a company has high return on equity, shareholders themselves will say, please don't pay dividend. Because if the company pays dividend, I don't have any other opportunity where I can invest and earn more than 15% on my money, right? So if a company's return on equity is, let's say, 18%, I would not want that company to pay dividend to me. So in a way, can I say, if a company has high return on equity, company has easy access to capital if its average return on equity is high. अगर एक कंपनी है जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी 18-20%, उसको तो कभी भी कैपिटल मिलेगा ना. वो किसी और शेयर होल्डर के पास क्यूआईपी वगैरह कर सकता है. इट कैन इश्यू मोर शेयर एंड रेज मनी. बिकॉज शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए? उसको रिटर्न चाहिए. इफ हिस्टोरिकली द कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, 20%, ओके, वो क्यूआईपी भी इजीली रेज कर सकता है. तो ज्यादा शेयर इश्यू करके और पैसा उठा सकता है. बिकॉज दे हैव बीन एबल टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी फॉर द शेयर होल्डर्स. So this is a trait
high ROE companies can get capital which is very good. So growth easily हो सकता है उनका. Correct? A very, very nice quote by Warren Buffett as well. If you're looking for wonderful results, you want a business with a high return on equity and the ability to reinvest earnings at that rate over time. अगर एक साल में in let's say in 1 year a company has earned 20% return on equity, that shouldn't be a one-off thing. They should now not distribute dividend, retain it, and keep earning somewhere around 20% return every year. Then your real compounding will happen. So there are two things. You want a company having high return on equity, but they should also not distribute a lot of dividends. They should keep reinvesting it and keep earning 20%. दोनों conditions satisfy होना चाहिए. Understood what he's saying? If you're looking for wonderful results, two things you need. You need first a company जिसका return on equity is high. They're earning a lot of money for their shareholders. Plus they should reinvest it. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो फिर वो कंपाउंडिंग नहीं होगा ना. समझा? जैसे इफ यू टेक बिग एफएमसीजी कंपनीज, उनका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा होता है इंडिया में, बट व्हाट दे डू, दे टेंड टू डिस्ट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ डिविडेंड, तो फिर वो कंपाउंडिंग किकिंग नहीं होगा. Yes. So with this, we are done with the basic understanding of return on equity. Yes. We'll now move on to the second part, which is DuPont analysis. Let me not give you the formula of DuPont directly. Okay, there is a formula of DuPont. I can directly show it to you, and the things work. But let me derive it. Like let me make it very organic. Okay. How does a business work? How does a business work? Three-step process. If you make it very simple, from if you think from first principles, yes, business कैसे चलता है कोई? First you raise money and buy assets. Let's say I want to, start manufacturing of this pen. Let's say I want to start a business where I want to manufacture this pen. What will I need? Firstly, to make this pen, I need machines, few machines which will help me produce these pens. Correct? And to buy those machines, what would we need? We need money. So step one क्या होगा guys? I have to raise money. Using that money, I will buy assets. Second step क्या होगा? I will use those assets, those machines, and generate revenue. मैं sales बढ़ाऊंगा. Third, is only revenue important? What are we doing business for? To earn profit, right? Apna, it is a profit making entity. Any company, any business is a profit making entity. Your intention is to make profits. So third step क्या होगा? I have to convert my revenue into profit. And then I'll repeat. Correct? एक बार profit मिल गया, then again I will buy assets, use those assets, generate revenue, convert the revenue into profit. Then again repeat, buy more assets. That is how a business work, right? Do you agree with this? Everyone? Does this make sense? Yes, sir. This is nothing but your DuPont analysis. Now, if I tell you these three steps is nothing but your DuPont analysis. If you understand, when you raise money and buy assets, you raise money, buy assets. मतलब क्या? It is nothing but your leverage ratio. If this doesn't make sense, asset upon equity. You raise money, that is equity, and you buy assets, that is asset. So you use a ratio called asset upon equity, which tells you how much money, okay, you're using from equity to buy assets. Perfect. Step two is use assets to generate revenue. How much assets are helping you generate revenue? Let's say guys, you have 100 rupees assets. Using this, you can generate a revenue of let's say 50. So your asset turnover ratio is 0.5 times, 0.5x, 0.5 times. Why? Because for every 1 rupee of asset, you are able to generate 0.5 rupees of revenue. So that is asset turnover ratio. And the third one is you have to convert your revenue into profit, which tells you about the net impact, the net profit margin. So for every 100 rupees ka sales, you're able to do a profit of 12 rupees. So it means your net profit margin is 12%. Is this super clear? Yes. So this is nothing but your DuPont analysis. Sir, okay, what is DuPont then? DuPont क्या होता है ना guys? The word DuPont analysis मतलब एक ऐसा एनालिसिस wherein you are breaking down ROE. आप रिटर्न ऑन इक्विटी को ब्रेक डाउन कर देते हो. मतलब we already know रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला in the first part of our discussion we discussed. ROE is impact upon equity. But if I want to break that down into three small parts, can I say ROE is net profit margin into asset turnover ratio into leverage ratio? Sir, how is this possible? If you see this is the formulas, can you just
use your common sense mathematics and cut this sales, cut this assets. So you end up with ROE is equal to NPAT upon equity, which we already know. That return on equity is NPAT upon equity. This gets cut. So your logical doubt should be, why are we using this long cut formula when we already know ROE is NPAT upon equity? Because we want to know what is driving ROE. Return on equity को drive क्या करता है? I use always this one example. Okay, you can pay attention over here. You have net income, you have revenue, you have equity, you have assets for 3 years of a company. Yes. Simple, what you have to do is, if you want to find return on equity, net income upon average equity. Correct? The 3-year return on equity is 18.1, 18, and 17.4. So if you just read the ROE numbers, you would be happy that the ROE is good because it is more than 15%. And over a 3-year period, ROE is in the range. ROE is stable also because over 3 years, it's range bound. Range bound, matlab it is always between 17 to 18%. So it's stable also. ऐसा नहीं है ROE is very high just 1 year and then it is falling. So ROE is good, ROE is stable. So this is what you will conclude just by seeing the return on equity of a company. But this often might be misleading. How? If you just now use DuPont analysis, the numbers are already calculated for you over here. If you just now focus on DuPont analysis, see guys, this is net profit margin, this is asset turnover ratio, and this is leverage ratio. Net profit margin क्या हो रहा है every year? It is declining. Declining net profit margin, is it good or bad? It is definitely bad. Asset turnover ratio, it tells you about the efficiency of the company. So it was more efficient earlier, now it is being less efficient. Efficiency गिर रहा है, efficiency कम हो रहा है, bad. Leverage ratio बढ़ रहा है. So what does increase in leverage ratio mean? Leverage ratio is asset upon equity. So if this increases, what does it mean? It means that maybe you are taking a lot of loans. आप लोन ज्यादा ले रहे हो. So is it a good thing or a bad thing? Your dependency on loan is increasing. Again, it is a bad thing. So here, can you still conclude it is good and stable? No. Your margin is shrinking, your efficiency is going down, and maybe your dependency on debt is increasing. So it might not be good. Yes. So what we have to keep in mind is, only guys, when you, let's say you are reading about a company, you are researching about a company for investment purposes, and you saw the return on equity is 20%, 18%. You should not be extremely happy. You should take it with a pinch of salt because you have not yet used DuPont analysis. So looking at ROE in isolation won't help. I'll again repeat, ROE को अकेले देखे, ROE 15% है, ROE 18% है, 20% है, 25% है, उसको देखे you shouldn't be happy. Don't be very happy because you have not yet checked DuPont analysis. DuPont में आपको क्या करना है? Simple. You divide the ROE into 3 parts: net profit margin, asset turnover ratio, leverage ratio. 3 पार्ट में डिवाइड कर दो तो आपको समझेगा ओके क्या हो रहा है. सर, what does these 3 things indicate? Net profit margin indicates profitability of the business. Profitability बढ़ रहा है या कम हो रहा है. Asset turnover ratio क्या इंडिकेट करता है? Efficiency of the business. And leverage ratio क्या इंडिकेट करता है? Capital structure of the business. अगर leverage ratio बढ़ रहा है, what does it mean? It means या तो आप इक्विटी कम यूज कर रहे हो, ठीक है, या तो आप लोन ज्यादा ले रहे हो, जो भी है. सी योर असेट्स हैव टू बी फंडेड फ्रॉम डेट और इक्विटी. अंडरस्टैंड गाइस? आज मतलब लेट मी मेक इट दिस मोर सिंपलर. दिस इज योर बैलेंस शीट. Yes, you have assets on one side and you have equity and liability on the other side. Correct? Now, this is uses of funds, application of funds, and these are sources of funds. Uses of funds and sources of funds. Let's say you have 100 rupees worth assets. If you have assets worth 100 rupees, आपने 100 रुपए का सेट खरीदा है, वो कैसे खरीदा होगा?
या तो अपने इक्विटी से पैसा उठाया, या तो लोन लिया, लायबिलिटी यूज किया. It has to be one of these two sources, right? So your your leverage ratio is actually just an indication of this only. Leverage ratio is an indication of this, which is asset upon equity. So it tells you कितना आपने लोन लिया है, कितना इक्विटी लिया है. अगर आपने लेट से ओनली 20 रुपीज का लोन है, 80 का लायबिलिटी, करेक्ट, तो asset upon equity, this becomes 5. This is higher. So the more loan you take, higher will be your leverage ratio. करेक्ट. सो लेवरेज रेशियो क्या है? इट टेल्स यू कि आपका स्प्लिट क्या है. इफ यू हैव 100 रुपीज वर्थ ऑफ असेट्स, हाउ मच इज फ्रॉम इक्विटी, हाउ मच इज फ्रॉम डेट. दैट इज व्हाट योर लेवरेज रेशियो टेल्स यू. सो इट इन अ वे एक्सप्लेन्स द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस. इन अ वे एक्सप्लेन्स कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस. सो नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू असेट टर्नओवर रेशियो इनटू लेवरेज रेशियो. ठीक है. These are the key drivers. You can go through the whole formula once. If Krishna is saying, can you please explain the leverage ratio again? Sure. Sure. Guys, what's leverage ratio? Understand? Yes, as I told you. See, firstly, leverage ratio is asset upon equity. Okay. Now let's say there's a company X Limited, company Y Limited. Both have assets worth 100 rupees. Assets worth 100. Now X Limited is highly leveraged. So loan लिया, loan of 70 and equity of 30. On the other hand, loan is only 10 and equity 90. So yeah, this is highly leveraged. This is a leveraged company. High leveraged company, right? So what will happen? Asset upon equity karo. This is 100 upon 30 and this is 100 upon 90. So if you just do this calculation once, you will understand. This is 3.33. 3.33. Yes. And this is 1.11. So what does it, this number being higher means your company is more dependent on debt, which is true. देखो 100 रुपए का assets में से 70 का assets, out of 100 rupees of assets, 70 का assets is actually from loan. Correct? Is this making sense? हाँ Ditya, tell me. Sir, if the asset turnover ratio is low due to the increase in assets, so could we think that they are doing the growth capex? Correct. So if the asset turnover ratio is assets is high, asset turnover ratio is low. Yes. So in So the year to, they are doing a lot of capex, तभी asset turnover ratio आपका कम हो जाएगा. Efficiency will seem less because आज capex किया तो उसको उससे क्या revenue generate होने में 1-2 साल लगेगा. So that is true. If the asset turnover ratio is falling, if the efficiency is falling, please check why is that happening. If it is because of a new capex, अभी अभी नया नया capital expenditure किया, if they have done a new capex right now, करेक्ट, सो इट्स ओके. उसको रियलाइज होने में टाइम लगेगा. ऐसा नहीं है कि आज बिल्डिंग बनाया, खर्चा किया, तो आज के आज प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा. प्रोडक्शन स्टार्ट होने में टाइम लगेगा. यस. सो देन यू हैव टू चेक द टाइमलाइन. कौन कौन में मैनेजमेंट टाइमलाइन दे देता कि वी आर एक्सपेक्टिंग द रेवेन्यू टू स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस प्लांट, मे बी फ्रॉम द थर्ड क्वार्टर, फ्रॉम द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द ईयर एक्सेट्रा. तो आपको वो चेक करना है. मोमेंटरीली एसेट टर्नओवर रेशियो कैन सीम वेरी लो अगर नया नया कैपेक्स किया है तो. Yes. Yes. Now we'll discuss a few companies and see के real life companies में when we read ROE, how do we interpret it? Now there's a company called Shyam Metallics. Do you know what is the company Shyam Metallics doing? Okay, for people who don't know, Shyam Metallics एक company है which uses iron ore, core, coke, coal to make long steel products, alloys, flat steel products, etc. Instead steel के products बनाता है raw material use करके. ठीक है. Majority revenues in India, 90% India, 10% outside India. Shyam Metallics, basic simple company. अभी अगर आप देखोगे, the return on equity went from 29.5% to 11.5% in just 1 year. एक साल में return on equity fell from 29.5 to 11.5. आधे से कम हो गया. Now, when I see this, I should be curious, okay, why has this happened? And if I want to know why, what should you do? Apply DuPont analysis. So I found out the net profit margin, asset turnover, leverage ratio. हो क्या रहा है यहाँ पे? नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% से गिर गया.
asset turnover थोड़ा गिरा, financial leverage ratio has increased. Now you tell me, is it a good thing or a bad thing on all the three fronts? यहाँ पे the profit margin has decreased, bad. Asset turnover has gone down, again bad. So now prima facie reading, can I conclude this financial leverage ratio is increased? Again, not very good still. But if you want to study the company for investment purposes, आपको और deep dive मारना चाहिए. Maybe there is some geopolitical reason in this 1 year कि उनका margins इतना कम हो गया. Now why? So you understood, everywhere you have to ask yourself a why and then find answers for it. Return on equity ये हो गया, कम हो गया. क्यों कम हुआ? Why? Then you use DuPont. DuPont में भी net profit margin has gone down significantly. Why has this happened? Again ask a why and then read the financial. You understood? So this is how the thought process should work. आपका thought process ऐसा होना चाहिए. Return on equity देखा. If you find something unusual, use DuPont. Once you use DuPont, you will understand problem कहाँ पे है. सबसे बड़ा problem is net profit margin. ये हमें देखना चाहिए. 16% से 6% कैसे हो गया net profit margin? The main concern is profit margin over here. So if I want to understand what is happening in the business, I should just take margin में fluctuations क्यों है, and then you'll get to know the full story of the company. Clear? Let's take another case, guys. HUL, Hindustan Unilever. 82% return on equity था March 20 में, and now March 21 में, just in 1 year, the return on equity went from 82 to 18%. Why this would have happened? Think, asset turnover ratio. Guys, what do you think? So I'll tell you what equity happened. has increased. Exactly. So if you focus on the numbers, the return on equity has definitely fallen. We are curious as to why has this happened, so we should apply the DuPont analysis. Net profit margin, guys, has it increased or decreased? Rather than net profit margin has Increased. increased. So this is the Increased. least of our concerns right now. We should be very happy that our profit margin has increased. But what has happened? Our asset turnover has drastically fallen. Asset turnover has drastically fallen. Equity multiplier has actually halved. आधा हो गया equity multiplier. So our leverage ratio, equity multiplier मतलब another name for this is leverage ratio. So don't get confused. Leverage ratio. Yes. ये भी आधा हो गया. Guys, आधा हो गया leverage ratio. मतलब क्या? I'll tell you. When you see this ना, you should ask yourself why, and then you read about the company कि ये साल में कुछ हुआ था क्या in this 1 year. So when you read this, you'll understand. I'll tell you the story over here. Guys, HUL Hindustan Liver सबको पता है. So HUL actually acquired a company called as, एक यूनिट acquire किया GSK Consumer Healthcare. GSK Consumer Healthcare. You would have heard name of brands like Horlicks, Boost. सुना है guys सबने? Yes. Yes, sir. Horlicks, Boost, etc. तो essentially speaking ना, HUL as a company earlier HUL company का main products क्या? वो soaps, detergents वगैरह बेचता है, shampoos, ये इनके मेन प्रोडक्ट्स हैं ना. उनको ना हेल्दी ड्रिंक या बेवरेजेस ड्रिंक सेगमेंट में घुसना था. सो दे थॉट के अरे मैं इतना खर्चा करूँ, एक नया प्रोडक्ट बनाऊं, उससे अच्छा इनऑर्गेनिक ग्रोथ करता हूँ. ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब क्या? किसी और का एस्टेब्लिश्ड कंपनी को खरीद लूं, किसी और का एस्टेब्लिश्ड ब्रांड को मैं खरीद लूं. यस. सो उन्होंने क्या किया, ये जीएसके कंज्यूमर हेल्थ केयर की ये ब्रांड्स खरीद ली. ओके. एंड एचयूएल हैड टू पे अराउंड 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ पे करना है उनको. तो दे सेड वी विल पे, बट कैश नहीं है, वी विल पे यू इन स्टॉक्स. सो इट वाज एन ऑल स्टॉक डील. एक ऑल स्टॉक डील में एंटर किया उन्होंने, वेर इन द सेट के फॉर एवरी वन जीएसके कंज्यूमर हेल्थ केयर का शेयर दे विल गिव यू 4.39 HUL के शेयर्स. सो दे हैड टू इश्यू अ लॉट ऑफ HUL शेयर्स. अभी स्टोरी क्लियर हुआ. हुआ क्या, एचयूएल को एक कंपनी जीएसके कंज्यूमर हेल्थ केयर अक्वायर करना था. दे हैड टू पे 30,000, बट दे सेड हम कैश में नहीं पे करेंगे, वी विल गिव यू 30,000 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर ऑफ एचयूएल. एचयूएल को उतने शेयर दे देंगे आपको. तो जीएसके कंज्यूमर हेल्थ केयर सर ओके, वर्क्स फॉर अस. सो अभी आपको समझा गेम क्या हुआ.
30,000 करोड़ वर्थ के शेयर्स HUL had to issue। तो इक्विटी कितना बढ़ गया होगा गाइस, डू यू रिमेम्बर? यू अंडरस्टैंड राइट? इक्विटी वुड हैव इंक्रीज्ड, इतने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू कर दिया तो एक इक्विटी बढ़ गया, इक्विटी हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। एंड सेकंड क्या हुआ होगा, व्हेन यू अक्वायर, वो दूसरे जो ब्रांड है उनको अपने बहुत ज्यादा वैल्यू पे अक्वायर किया। सो गाइस, व्हेन यू अक्वायर अनदर कंपनी एट अ वेरी ह्यूज प्राइस, व्हाट डू यू रिकॉग्नाइज इन योर बुक्स? प्लीज टेल मी। Goodwill. गुडविल। एब्सोल्युटली करेक्ट। Goodwill. सो बहुत बड़ा गुडविल आपके बुक्स में आ गया, गुडविल इज एन असेट। तो असेट बहुत बढ़ गया, इक्विटी बहुत बढ़ गया, ये दो इफेक्ट आ गए। इक्विटी हैज इंक्रीज्ड अ लॉट एंड गुडविल हैज इंक्रीज्ड अ लॉट, दैट इज असेट हैज इंक्रीज्ड। उससे फर्क क्या पड़ता है? माई असेट टर्नओवर रेशियो, ये क्या होता है? सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। गुडविल आ गया बहुत, ये बहुत बढ़ गया, तो माई असेट टर्नओवर रेशियो विल फॉल, विच इज व्हाई दिस इज फॉलन। इक्विटी मल्टीप्लायर क्या होता है? असेट अपॉन इक्विटी, asset upon equity. Now, I told you asset has increased, but your equity has increased a lot. बहुत equity बढ़ गया, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया equity, because you had to issue 30,000 crores worth equity shares. So the leverage ratio also fell. So this fall is due to an acquisition, nothing else. Has the fundamentals changed? So as a retail shareholder, when you see return on equity is dropped from 82% to 18%, there is no need to panic. There is no need to panic at all. Why? Why you don't have to panic? Because this numbers, this asset turnover, even though asset turnover represents efficiency, but यहाँ पे efficiency कम नहीं हुआ। It is just that you have acquired a company through your equity shares, इसलिए यार equity multiplier गिर गया, आपका leverage ratio गिर गया, asset turnover भी गिर गया, but it is because of this acquisition. Has the fundamentals changed? No. Clear? Everyone in the class? Yes, sir. Yes, sir. सर वन क्वेश्चन Hmm. सर, तो उस हिसाब से ये पॉजिटिव न्यूज है, राइट? Sorry? ये पॉजिटिव न्यूज है, राइट सर? पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं है उतना हम बोल सकते। नाउ वी हैव टू सी कि ये जो उन्होंने 30,000 करोड़ पे किया, उससे यस कितना सर। सेल्स जनरेट कर पा रहा है, उससे कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। करेक्ट, यस बट सर। इमीडिएट इफेक्ट इन दिस ईयर यू हैव अक्वायर्ड, इमीडिएटली तो रेवेन्यू उतना बूस्ट नहीं। करेक्ट। यस सर। तो वी विल हैव टू सी दैट दिस एक्विजिशन दैट दे हैव डन, इज दैट एक्चुअली गोइंग टू हेल्प देम और नॉट। यस सर। Sir, I have a question. एंड Sir, सर हम दिस इज इसको व्हाई द मार्केट रिएक्टेड नेगेटिवली। Yes, initially they did, but then I guess it all faded away. Yes. सर सो इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी एट दैट टाइम इफ Exactly, रिकॉग्नाइज दिस। exactly, exactly, yes. Sir, I have a question. यस सर। So, it was in the time of Corona. So, how should we how should we analyze on that basis? Like, if there is a huge global event going on, हाँ, so that can also affect see, on return. the most tricky thing to analyze is the merger. ऐसा कुछ एक्विजिशन होता है ना, बहुत ट्रिकी होता है। ओके, तो यहाँ पे ना थोड़ा यू हैव टू ऑलवेज रिलाई ऑन द मैनेजमेंट एबिलिटी। I in the past we have seen a lot of cases wherein यार बहुत अच्छे companies acquire हुए हैं, you have acquired a very good company, but when you acquire that company ना, maybe there is a possibility कि दो companies का cultural difference है, या because of a lot of issues that merger जो expectations था कि जितना synergies create होगा उतना होता नहीं। टाटा स्टील ने भी एक बहुत बड़ा मर्जर किया था मेनी कपल ऑफ डेकेड्स बैक, इट वाज अ ह्यूज फेलियर फॉर देम, फिर राइट ऑफ करना पड़ा था वगैरह, एंड पीपल एंटिसिपेटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो बहुत ट्रिकी होता है एक्विजिशन। ठीक है, तो इनिशियली ऐसी चीजों से दूर रहना का, अगर एक्विजिशन हो रहा है और आपको अनसर्टन लगता है, दूर रहो। बिकॉज होता क्या है कि when people invest into such companies कि चलो this company is acquiring another company, okay, काफी टाइम इट इज होप बेस्ड इन्वेस्टिंग, होप्स है, कुछ है नहीं अभी, तो इट इज थोड़ा तुक्का। ठीक है, अनलेस, बिकॉज वो कैसे मैच होगा, दो कंपनीज का सिनर्जी बैठेगा कि नहीं वो हमें पता नहीं अभी तक। तो यू हैव टू सी द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी के उसने पहले कैसे की है ये चीजें, हाउ हैव दे परफॉर्म्ड इन द पास्ट, आर दे इनटू गुड एक्विजिशन, तो अच्छे एक्विजिशन। अगर आप देखोगे ना अपना मन्नापुर ना कौन सा ग्रुप है, मुरुगप्पा ग्रुप, मुरुगप्पा ग्रुप इज द ओनली ग्रुप फ्रॉम व्हाट माय लिमिटेड नॉलेज इज
मुरुगप्पा ग्रुप के जितने भी एक्विजिशंस आप देखोगे इन द पास्ट, बहुत कम, मतलब बहुत सोच सोच के वो लोग एक एक कंपनी को अक्वायर करते हैं, एंड वॉट एवर कंपनी दे बाय स्टेक इनटू दे अक्वायर ना, यू विल सी द कंपनी डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन द नेक्स्ट 3-4 years। सो आप उतना दिमाग लगा सकते हो, मुरुगप्पा ग्रुप को ट्रैक करो। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा कि मुरुगप्पा ग्रुप जो भी कंपनी अक्वायर करता है ना, देन दे टर्न इट अराउंड वेरी वेल, एंड दे आर एबल टू डू वेरी गुड इन द फ्यूचर। यस, सो दैट इज द ओनली वे आई फील इट्स पॉसिबल, बिकॉज वरना तो देखो तुक्का ही है इसका, बिकॉज नो वन नोस के प्रैक्टिकली वो जो उन्होंने सोचा था कि व्हेन एक्विजिशन हैपेंस दे विल गिव आउट स्टेटमेंट्स कि हम इतना सिनर्जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो लोग क्या करते हैं वो फैक्टर इन करके शेयर प्राइस बहुत बढ़ जाता है, एंड देन यू बाय एट सच अ हाई प्राइस। फिर थोड़ा भी सिनर्जी नहीं मिला, और जो जो उन्होंने बताया था ये होगा वो नहीं हुआ, तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। करेक्ट। Yes, sir. यस यार। I wanted to ask कि HUL ये GSK को जो एक्वायर कर रहा है 30,000 करोड़ इक्विटी के बेसिस, मतलब इक्विटी के एक्सचेंज में, तो हम्म। उससे इक्विटी कैसे इंक्रीज हो रहा है? वो मतलब एडिशनल उसको पैसा तो आ नहीं रहा है, तो वो न्यू शेयर्स इशू कर रहा है क्या? मतलब कैसे ट्रांजैक्शन है वो नहीं समझ रहा है। समझा। सो this is how, guys, an acquisition of an all stock deal work. Okay, what happens is, let's say this is अपना HUL, दिस इज GSK कंज्यूमर हेल्थ केयर, ये पूरा उसका बिजनेस ट्रांसफर करना। बिजनेस मतलब क्या, ऑल द असेट्स एंड ऑल द लायबिलिटीज आर ट्रांसफर। अभी उसके एक्सचेंज में वो क्या देगा, उसके एक्सचेंज में, यस, दे विल गिव 30,000 करोड़। अभी या तो आपके पास ऑप्शन है आप कैश दो, या तो आप स्टॉक्स दे दो। HUL के पास इतना कैश नहीं था, तो उन्होंने बोला हम स्टॉक्स दे देंगे, तो 30,000 करोड़ वर्थ ऑफ HUL शेयर्स वो दे देगा। वर्थ मतलब क्या, लेट मी टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। अगर गाइस एक HUL का शेयर, ओके, आज का प्राइस है 3,000 रुपए, 3,000 रुपीज का एक शेयर है, ठीक है, तो कितने शेयर्स देने पड़ेंगे HUL को? 10 करोड़। 10 का। सो 10 करोड़ HUL शेयर्स HUL प्रिंट करेगा। HUL is the company can generate, can print is the wrong word, but they can make more equity shares, ज्यादा इक्विटी शेयर जनरेट करेंगे, और वो GSK कंज्यूमर को वो लोग इश्यू कर देंगे। तो शेयर्स आर इश्यू, करेक्ट, शेयर्स इश्यू कर दिए, तो जो इसका बैलेंस शीट है इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो दिस विल गो अप बिकॉज यू इश्यूड मोर शेयर्स। करेक्ट, मेक सेंस। एंड इसका रिजर्व्स भी बढ़ जाएगा, बिकॉज रिजर्व्स क्यों बढ़ता है, ये शेयर का फेस वैल्यू माइट बी 10 रुपया ओनली, राइट, तो बाकी सब इज सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो ये प्रीमियम बढ़ जाता है रिजर्व्स में, रिजर्व्स इंक्रीज। इन शॉर्ट, आप इजी वर्ड्स में समझो, इक्विटी जो आपका होता है वो बढ़ जाता है। व्हाई डज इक्विटी इंक्रीज? इक्विटी मतलब शेयर्स ज्यादा आपने इश्यू किया, इक्विटी बढ़ गया। अभी ये टैली कैसे होगा, सामने असेट्स भी बढ़ गया, राइट, असेट्स आया, तो अल्टीमेटली बैलेंस शीट विल स्टिल बी टैलीड। सॉर्टेड ब्रो। Sir, what do you ओके mean सर। by share generate किए? मतलब यू सो लेट्स से अभी व्हेन यू रीड HUL का बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स अगर आप जाओगे, तो लेट्स से इक्विटी शेयर्स, कंपनी के पास लेट्स से अभी 5 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, कंपनी ने 5 करोड़ शेयर्स इश्यू किए थे। आज अगर आप जितने भी शेयर्स मार्केट में है सबको टोटल करोगे, तो 5 करोड़ शेयर्स है, और अभी HUL को और 10 करोड़ शेयर्स देना है, तो 10 करोड़ नए शेयर्स बनाएगा, तो टोटल 15 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। बट सर उसमें सर तो ये जो 10 करोड़ बना रहा है, वो तो सप्लाई आ तो गया ना, तो अभी तो वैल्यू तो घट जाएगा। करेक्ट, तो वैसा ही होगा ना, आपका EPS कम हो जाएगा, अर्निंग्स पर शेयर, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स हैव इंक्रीज्ड अ लॉट, सर अर्निंग्स पर शेयर विल डिक्रीज एब्सोल्युटली। इसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी, आपको अभी आपको समझा लॉजिकली, पर सर व्हाई इज वैल्यू रिटर्न पर ऑन शेयर भी इक्विटी। तो डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि तो वो क्या क्या, वैल्यू तो सॉरी एक सॉरी। ही, वैल्यू पर शेयर भी तो डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का कंपनी है, ठीक है, उसका 1 करोड़ का शेयर है, तो पर हम्म। शेयर इज 100 रुपीज, राइट? करेक्ट। Okay, so if the company make more 1 crore share, then the value will go down to 50 rupees. करेक्ट। So नहीं, इसमें ऐसा नहीं क्या? होता, उन्होंने मार्केट में इश्यू नहीं किया ना, उन्होंने GS के कंज्यूमर को डायरेक्टली दे दिया, पब्लिक ऑफर लाकर IPO नहीं लाया उन्होंने। ठीक है।
सर ओके, होल्डिंग्स में कैसा अफेक्ट करेगा एचयूएल का, मतलब क्या डिफरेंस आएगा होल्डिंग्स में? सबका स्टेक थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा ना, आपका मतलब हाँ प्रमोटर्स का? सबका स्टेक डाइल्यूट हो जाएगा। टुडे लेट्स से आई हैव 10 शेयर्स ऑफ HUL एंड टोटल 100 शेयर्स HUL के, तो मेरे पास 10% स्टेक है कंपनी का। अभी उन्होंने क्या कर दिया, यस। 100 का 200 शेयर्स हो गए, 100 शेयर्स एक्स्ट्रा इश्यू कर दिया, मेरे पास तो 10 ही है, तो मेरा ऑटोमेटिकली स्टेक 5% हो गया, ओके। बराबर ना? यस। यस सर। गॉट इट सर, गॉट। Third case study, something more for us to think, guys. Titan करके कंपनी, आई होप ऑल ऑफ यू नो टाइटन, यस। उसके फाइनेंशियल्स, उसका ROE ड्यूपॉन्ट का डेटा इज ऑन स्क्रीन, उसका गाइस रिटर्न ऑन इक्विटी इज एक्चुअली इंक्रीज्ड। नाउ लेट्स फाइंड आउट वेदर वी शुड बी हैप्पी और नॉट अबाउट इट। रिटर्न ऑन इक्विटी वेंट फ्रॉम 27 to 37%, 10% से रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ गया। Now, you guys tell me, why has this increased? See all the three DuPont factors. Tell me what has happened actually. What is our opinion on this? Let's write that down. Guys, net profit margin has gone from 8 to 6.8%. Is it a good thing or a bad thing? Bad. Bad Bad thing. thing. We don't want the margin to go down, the profitability shouldn't go down. Asset turnover ratio has grown from 1.5 to 1.62. Good thing or a bad thing? Good. Good thing. Good thing, the efficiency has actually increased. अभी मैं Good. आपको एक चीज बताता हूँ guys. In a way, can I say, mathematically speaking, the fall in net profit margin is offset by the increase in turnover ratio. Sir, ये can you थोड़ा repeat? बहुत कट कर देंगे अपन, यस और नो? द ये जो है ये फॉल हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन गिरा, पर समवॉट सिमिलर असेट टर्नओवर बढ़ गया, राइट? तो कैन आई से ये Yes, sir. एक दूसरे को कट कर देगा। सो टू टू ओवर सिंप्लीफाई दिस, कैन आई से द रिटर्न ऑन इक्विटी का 10% इंक्रीज is somewhat due to the increase in leverage ratio. ये तो एक दूसरे को कट कर दे रहा है, राइट? इफेक्ट, तो द होल Yes. इफेक्ट increase in ROE is somewhat due to the increase in leverage ratio. Yes. Now let's ask, why has this happened? Leverage ratio क्यों बढ़ा? See, to do research for this webinar, I myself was reading through a lot of companies. Then I have cherry picked only those companies which I feel are worth discussing. तो ये लेवरेज रेशियो क्यों बढ़ा ना, इवन आई वाज वेरी क्यूरियस, तो आई एग्जैक्टली टेल यू मैंने क्या किया टू टू फाइंड आउट। तो आई टू रीड द एनुअल रिपोर्ट एंड ऑल। अभी देखो गाइस, हुआ क्या, टाइटन का ना, टाइटन का बोरोइंग्स एंड रिजर्व्स दोनों आपको दिखाता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 23, फाइनेंशियल ईयर 24, borrowings was somewhere around 9,000 crores. It went to around 15,000 crores. एंड 11.5 थाउजेंड करोड़ का रिजर्व्स था, वो चला गया 9,000 करोड़। बोरोइंग्स बढ़ा और रिजर्व्स कम हो गया। अभी आपको समझाता हूँ गाइस, व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ सिचुएशन वेयरइन लेवरेज रेशियो हैज फॉलन डाउन, लेवरेज रेशियो कब गिर सकता है, कोई एनीवन कैन टेल मी? टू स्टैंडर्ड इफेक्ट्स, व्हेन कैन योर सर, लेवरेज जब रेशियो, असेट बढ़ेगा और देखो इक्विटी कम असेट का मत होगा। सोचो, बिकॉज असेट ओके। कब बढ़ सकता है ऑटोमेटिकली, when नहीं, can you increase or decrease asset? Only when equity or डेट borrowings से there is a पैसा आएगा। change, correct? Because that is या the sources of funds से सोचो, your leverage ratio can increase when either borrowings are increasing or equity is decreasing, yes or no? यस सर। Yes. लेवरेज रेशियो कब बढ़ सकता है आपका, जब आपने ज्यादा उधार लिया या तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा कम कर दिया, मतलब उनको वापस बाईबैक वगैरह कर दिया, उनके शेयर वापस कर लिए, शेयर कैपिटल कम कर दिया, करेक्ट? सो लेवरेज रेशियो कैन इंक्रीज इन टू सिचुएशंस। यहाँ पे गाइस क्या हुआ, हियर इज अ वेरी वेरी रेयरली दिस हैपेंस, टाइटन का एक बहुत रेयर एग्जांपल है जहाँ पे योर बोथ ऑफ द थिंग्स हैव हैपेंड, दोनों एक साथ हो गया। आपने उधार भी ज्यादा लिया, बोरोइंग भी बढ़ा दिया एंड इक्विटी भी कम हुआ, तो दोनों हुआ, तो इसलिए लेवरेज रेशियो एकदम से बहुत बढ़ गया, एंड बिकॉज ऑफ दिस योर ROE जंप्ड 10%। सर क्यों हुआ, व्हाई हैज द बोरोइंग इंक्रीज्ड एंड इक्विटी गॉन डाउन? तो आई विल टेल यू हुआ क्या है गाइस, टाइटन ने एक्चुअली द सिनेरियो इज
ओके, फाइनेंशियल ईयर 24 का अगर आप एनुअल रिपोर्ट चेक करो, उसका एनुअल रिपोर्ट, डू यू नो देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड कैरेट लेन? कैरेट लेन ना Yes. इसका ही कंपनी है, टाइटन का ही कंपनी है। यस, कैरेट लेन एक टाइटन का ही कंपनी है, बट टाइटन डज नॉट होल्ड 100% स्टेक इन कैरेट लेन, 100% ओनर नहीं है। कैरेट लेन वाज स्टार्टेड बाय सम अदर पीपल, फिर सम स्टेक वाज सोल्ड टू टाइटन। इस बार टाइटन ने क्या सोचा, मुझे पूरा कंपनी खरीद लेना। तो व्हाट इज टाइटन डन? टाइटन यूज्ड इट्स रिजर्व्स टू बाय 27.56% stake in Carrot Lane from its फाउंडिंग शेयर होल्डर्स। अभी आपको समझा, उन्होंने उनके रिजर्व्स यूज करके ये खरीदा है। क्या खरीदा है? कैरेट लेन के थोड़ा शेयर्स खरीदे उन्होंने, तो इसलिए रिजर्व्स कम हो गए। You understood why the reserves have gone down. And to do यस this, they wanted money. पैसा चाहिए था, तो इसलिए थोड़ा पैसा बोरो भी कर दिया। सो उधार लेके उन्होंने कंपनी का पूरा स्टेक खरीद लिया, which is why borrowing increased and reserves went down. So should we be very happy that the return on equity has increased? We should not be very happy. This extra 10% is just an illusion. Next year से it will normalize again. Yes. So whenever you see return on equity का figure, bifurcate, DuPont करो। DuPont करने से आपको समझ गया, it is all because of leverage ratio. Leverage ratio क्यों बढ़ा है? Borrowings बढ़ा। Why has the borrowings increased? Because they wanted money. They wanted money to buy shares in Carrot Lane. ठीक है? Guys, people are able to understand? सर Yes, sir. इक्विटी कैसे कम हो रहा है यहाँ पे? Sorry, इक्विटी कैसे कम हो रहा है यहाँ पे इस because केस में? reserves कम हो रहा है, right? They are using the हाँ, reserves to buy. ओके ओके, रिजर्व। Correct? So it's उनने like बोरोइंग और रिजर्व्स दोनों मिला के दूसरी इक्विटी एडिशनल एक्वायर की है, राइट? correct, correct, ओके सर। perfect. Last example, Nestle India. सर एक एक मिनट, सर इससे नेक्स्ट ईयर कैसे इफेक्ट आएगा जो आप बोल रहे हो नॉर्मलाइज हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर से, बिकॉज नेक्स्ट ईयर इज नो एक्विजिशन, राइट? सो अभी नॉर्मली आपका रिजर्व वापस बढ़ेगा, आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, आपका रिजर्व बढ़ता जाएगा। एंड जैसे जैसे रिजर्व बढ़ता जाएगा, आप फिर वापस बोरोइंग रीपे करते जाओगे टू ब्रिंग इट बैक टू योर नॉर्मल लेवल। करेक्ट? तो यस फिर सर, वापस यस सर। वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, लेवरेज कम हो जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी कम हो जाएगा। सो रिटर्न ऑन इक्विटी का मीनिंग क्या होता है? हाउ मच मनी आर दे अर्निंग फॉर द शेयर होल्डर। एवरेज, या। दैट इज यस नॉट सर। ट्रू। 37% नॉट ट्रू। फॉर एवरी 100 रुपीज, आज मैं कंपनी में 100 रुपए डालूंगा तो 37 अर्न करके नहीं देगा। दिस इज आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड बिकॉज ऑफ दिस वन वन टाइम इफेक्ट, दैट्स इट। ओके सर। गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। आप ना यूट्यूब वगैरह पे, एंड देयर आर लॉट ऑफ यू नो इन्फ्लुएंसर्स सो टू से, दैट टॉक अबाउट नेस्ले इंडिया। नेस्ले नहीं, काफी सारे एफएमसीजी कंपनीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है? आप सीएफए वगैरह देखो, पढ़ो, या कहीं पे भी नेस्ले वगैरह कंपनी का एग्जांपल लेते हैं कि नेस्ले का रिटर्न ऑन इक्विटी इज 80 to 100%, विच इज ट्रू। आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, बट व्हाई इज दिस ट्रू? आज इसको डिकोड करते हैं, बिकॉज ये व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ना, जब मैं सीएफए वगैरह पढ़ता, मेरे को ना रिटर्न ऑन इक्विटी का ये नेस्ले वाला पार्ट कभी समझा ही नहीं है। गाइस, टू टेल यू व्हाट द डिस्कशन इज, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ नेस्ले, नेस्ले का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, यस, इन दिसंबर 22 इज 97%, दिसंबर 23 इज 121%। 100% का रिटर्न ऑन इक्विटी, ये पॉसिबल हो सकता है क्या गाइस? इज दिस पॉसिबल? मतलब आप समझो, रिटर्न ऑन इक्विटी 100% क्या होता है? मतलब जितना पैसा है शेयर होल्डर का, उतना डबल करके देता हो। मतलब 100 रुपीज शेयर होल्डर का 100 रुपया कंपनी में, तो 100 रुपए पे और 100 रुपया कमाता है। 100% रिटर्न ऑन इक्विटी, एक साल में आपका पैसा डबल करके देता है। इफ द शेयर होल्डर्स 100 रुपीज ऑफ शेयर होल्डर मनी इज इन द कंपनी, दे डबल इट इन जस्ट 1 year. If this is possible and if this is true, why is not all the investors in the whole world only buying Nestle shares? Is there any other company which doubles your money every year? Is it possible? No. So why are we not only investing? अपना पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ नेस्ले में डाल देता ना, खत्म करते बात।
इन्वेस्टिंग करने का जरूरत क्या फिर? What's the need of doing equity research, finding stocks when you found a stock that is doubling your balance sheet? That's let's say sorry, doubling your money every year. Anyone? Explain this in a very simple way. Return on equity, जैसे हमने let's go to first principles thinking. Okay, return on equity. Return on equity is net profit margin into asset turnover ratio into leverage ratio. Correct. Now we are saying the return on equity is extraordinarily high. Now I'll tell you there are two reasons for that. There's not just one reason, there are two reasons for that. पहला रीजन है कि आपका ये इक्विटी बहुत कम है. First reason is your equity is very low. And the second reason is your asset is very low. That's it. दो रीजन है बिकॉज ऑफ आरओई इंक्रीजिंग. नाउ यू अंडरस्टैंड, इक्विटी कम है तो ये बढ़ेगा तो आरओई बढ़ेगा, असेट कम Yes, है sir. तो दिस रेशियो विल इंक्रीज. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. ओके, लेट्स रिवर्स इंजीनियर एंड सोचते क्यों ऐसा हो रहा है. ओके, एक एक पॉइंट लेते हैं अभी. लेट्स डिस्कस दिस सबसे पहले. व्हाई इज द इक्विटी गोइंग डाउन? प्लीज ध्यान से सोचो, आई टेक ऑल योर डाउट्स एट द एंड. ध्यान से सुनो पहले. ओके, व्हाई इज द इक्विटी लो? इक्विटी क्या होता है? मैंने पहले ही बोला था, इक्विटी इज नथिंग बट इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स. एवरी ईयर जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो ना गाइस, वॉट एवर प्रॉफिट दैट दे अर्न, वॉट एवर प्रॉफिट दैट यू अर्न, इफ यू डोंट डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड, you add it back to the reserve. So reserves क्या होता है? It is nothing but undistributed dividend. Undistributed dividend. Normally एक कंपनी होता है 100 रुपीज का प्रॉफिट कमाया, 100 इज द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. उसमें से लेट्स से 5 रुपीज इन डिविडेंड, 95 दे विल री इन्वेस्ट. 95 they will keep with the company, reinvest करेंगे. तो this gets added to reserves. बट यहाँ पे हो क्या रहा है ना, such big FMCG companies they don't reinvest. Why do they not reinvest? क्योंकि उनके पास गाइस ग्रोथ के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. दे डोंट हैव अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ. सो क्या करते हैं, उल्टा कर देते हो. 95 का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सिर्फ 5 रुपया रिजर्व में ऐड करते हैं. They only just an example. Their dividend distribution is almost 80 to 90%. 80 to 90% of profit that they want they distribute as dividend. क्यों डिविडेंड भी क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? उसके दो रीजन है. पहले तो नेस्ले एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है. दैट कंपनी होल्ड्स 50 60 70% स्टेक इन नेस्ले इंडिया. उसको पैसा चाहिए, वो कैसे पैसा ट्रांसफर करेंगे? डिविडेंड. when you pay dividend 60% of shares is with that company, तो 60% डिविडेंड उसको जाए, फॉरेन कंपनी को, पेरेंट कंपनी, उसको पैसा चाहिए, वो पैसा वापस ले लेगा ना. समझा? तो एक तो पेरेंट कंपनी को पैसा चाहिए, पेरेंट कंपनी वांट्स मनी. दैट इज वन रीजन. एंड द सेकंड रीजन, दिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है नहीं ना गाइस. अभी एफएमसीजी कंपनीज है. अभी गाइस देखो, इंडिया में पावर सेक्टर माइट डू वेल बिकॉज पावर हैज टू रीच एवरीवेयर. इफ यू विल कुछ भी हम ज्यादा यूसेज होगा, डेटा सेंटर वगैरह, पावर ज्यादा चाहिए. बट डू यू थिंक टूथपेस्ट, टूथब्रश का पेनिट्रेशन इज लेफ्ट? नो. इन द स्मॉलेस्ट ऑफ विलेज एंड टाउन पीपल हैव टूथपेस्ट नाउ. करेक्ट. सो पेनिट्रेशन बाकी नहीं है कुछ अभी. और तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर वेरी लिमिटेड इन बिग एफएमसीजी कंपनीज नाउ. यस, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है. पेरेंट को पैसा चाहिए, बिकॉज ऑफ विच दे डिस्ट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ डिविडेंड. दे डिस्ट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ डिविडेंड, रिजर्व्स कम हो जाता है. रिजर्व्स कम हो गए, इक्विटी कम हो गया, इक्विटी कम, योर आरओई इंक्रीजेस. क्लियर? यस एवरीवन? तो सर सारा जो कैश काउज होता है उसका आरओई तो इंक्रीज ही होता होगा. करेक्ट, वही होता है. थोड़ा बहुत समझ रहे हो गाइस? व्हाई आर दे पेइंग डिविडेंड? अ लॉट ऑफ रीजंस. एज आई टोल्ड यू, डिविडेंड ज्यादा पे करता है, रिजर्व्स कम होता है, रिजर्व्स कम होता है, इक्विटी कम हो जाता है. करेक्ट. अ लॉट ऑफ रीजंस. ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है. आपने देखा होगा गाइस इन आवर सीएफए डिस्कशन, फॉर पीपल हु स्टडी सीएफए विद मी, सीएफए डिस्कशन में भी मैंने एक बार बोला, such companies have a negative cash conversion cycle. What does it mean negative cash conversion cycle? उनका वर्किंग कैपिटल नीड्स ही नहीं होता. मतलब क्या होता है, कस्टमर इमीडिएटली पे करता है. व्हेन आई सेल अ प्रोडक्ट, कस्टमर पेज मी इमीडिएटली, बट देन आई हैव टू पे द सप्लायर जिससे मैं प्रोडक्ट खरीदा हूं, उसको हैव टू पे आफ्टर 2 months. समझा? तो होता क्या है, आई बाई प्रोडक्ट्स, आई सेल इट,
आई रिकवर मनी फ्रॉम द कस्टमर एंड देन आई हैव टू पे। तो मेरे को पैसा चाहिए क्या वर्किंग कैपिटल में? रोलिंग में पैसा ही नहीं चाहिए मेरे को। देयर इज नो नीड, सो देयर इज नो मनी ब्लॉक्ड इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में कुछ पैसा नहीं चाहिए, ग्रोथ है नहीं, तो फिक्स्ड कैपिटल में पैसा डालेंगे मतलब क्या है? एंड डिविडेंड चाहिए पेरेंट कंपनी को, तो हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सिंपल। देयर नो नीड टू री इन्वेस्ट, देयर नो नीड टू री इन्वेस्ट। आपका रिजर्व्स बढ़ता ही नहीं है, योर रिजर्व्स डोंट इंक्रीज। यस, सो द फर्स्ट रीजन, यस, ये इक्विटी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ योर दैट योर आरओई कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। समझा? आई हैड टोल्ड यू गाइस दिस इज लेवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो कब बढ़ता है? देयर आर टू रीजंस। आई टोल्ड यू टू रीजंस, या तो बोरोइंग बढ़ा, लोन बढ़ा, या तो इक्विटी कम हुआ। दिस इज नॉट द केस ओवर योर। द कंपनीज आर डेट फ्री, इनके पास कुछ लोन ही नहीं है, बोरिंग्स बढ़ी नहीं है, बढ़ेगा कैसे? देयर इज नो बोरोइंग्स। सो द लेवरेज रेशियो इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इक्विटी। इक्विटी इज डिक्रीजिंग बिकॉज रिजर्व्स आर गोइंग डाउन। Why are reserves going down? Because they are distributing dividend. Why are they distributing dividend? Because there are no growth opportunities, so no fixed capital. नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल, तो वर्किंग कैपिटल नीड्स भी नहीं है, एंड पेरेंट कंपनी को डिविडेंड चाहिए, सो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। पूरा आपको लॉजिक समझा एवरीवन? यस सर। सर असेट सिर्फ कैश डिस्ट्रीब्यूशन से कम हो रहा है ना? नहीं, आई टेल यू व्हाई इज असेट्स आल्सो गोइंग डाउन। गाइस प्लीज फोकस, व्हाई आर असेट्स गोइंग डाउन? एनीवन? दिस इज एक्चुअली द मेन पॉइंट। ये डिविडेंड तो ठीक है, एक्चुअली गाइस ये आपका आरओई क्यों बढ़ रहा है? मेजोरिटीली इट इज बिकॉज ऑफ लो असेट। व्हाई इज इट बिकॉज ऑफ लो असेट? और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। Today guys, if you are craving noodles right now, guys, if some of you are craving noodles, कि noodles खाने का बहुत मन है guys, नूडल क्रेव कर रहे हो, तो क्या करोगे? बहुत मन हो रहा है सर नूडल्स, आप गए सुपर मार्केट, अपने दाल। लिए मैगी खाओगे आप? यस। अगर मैंने मेरा नया ब्रांड चालू किया, नील नूडल्स, नील नूडल्स, विल यू ट्राई समथिंग लाइक दैट और वुड यू स्टिक टू मैगी? रियलिस्टिकली यू विल स्टिक टू मैगी, ब्रांड है। यस सर। अभी आप समझो, मैं जो नूडल्स बना रहा हूँ और मैगी बना रहा है, फर्क है वो दोनों में? इज देयर एनी डिफरेंस? यस सर। यस, बट लेट्स से नूडल्स आर मेड थ्रू अ मशीन, आई वुड बाय अ मशीन। मैगी बनाने के लिए भी एक मशीन है, यस और नो? लेट्स से माई मशीन यस सर। कॉस्ट 2 करोड़, मैगी बनाने के लिए जो मशीन चाहिए दैट इज ऑल्सो 2 करोड़। दिस इज नील नूडल्स। नील नूडल्स बनाने के लिए जो मशीन है वो भी 2 करोड़ का। मैगी नूडल्स बनाने के लिए जो नेस्ले का, नेस्ले का ही है, मैगी इज अ ब्रांड ऑफ नेस्ले, उनको भी जो चाहिए वो भी 2 करोड़ का है। करेक्ट? यस और नो गाइस? प्लीज प्लीज यस ऑनेस्टली, सर। यस दो सर। भी ऊपर नीचे होगा थोड़ा, मे बी इट इज 2.5 टू 2 करोड़, बट सिमिलर है। हम दोनों ने चाइना से लेट से खरीदा, बोथ ऑफ अस हैव बॉट अ मशीन, इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम चाइना। नेस्ले इज मेकिंग मैगी नूडल्स, नील इज मेकिंग नील नूडल्स। नाउ अंडरस्टैंड, टुडे लेट्स से विराज, विराज को ना आज एक नूडल कंपनी खरीदना है, विराज वांट्स टू बाय अ नूडल कंपनी, तो आई एम रेडी टू सेल माई ब्रांड लेट्स से, एंड मैं 15 करोड़ में मेरा नूडल कंपनी बेचने के लिए रेडी हूँ। आई विल सेल नील नूडल्स 15 करोड़ में। आप 15 करोड़ में मैगी का ब्रांड खरीद सकते हो क्या? नो सर। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि ब्रांड मैगी, वैल्यू बहुत हाई है। ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी है सर। मैगी का ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ा है, बट वी हैव स्टडीड इन सीएफए, इन सीए, इन ऑल द कोर्सेज आल्सो, दैट कैन यू रिकॉग्नाइज सेल्फ जनरेटेड गुडविल इन योर बैलेंस शीट? नो, नो सर। नो वी सर। तो कांट। नो सर। इवन दो गाइस, मैगी का आज वैल्यू होगा 15,000 करोड़, मैगी का ब्रांड का वर्थ वुड बी 15,000 करोड़, एंड नील नूडल्स का वर्थ विल बी ओनली 15 करोड़ स्टिल। जब आप कंपनी का बैलेंस शीट देखोगे, बैलेंस शीट में असेट साइड में यहाँ पे 2 करोड़ का मशीन है, तो 2 करोड़ का मशीन, यहाँ पे भी असेट साइड 2 करोड़ है। समझा? बिकॉज देर इज अ प्रॉब्लम इन आर अकाउंटिंग सिस्टम। द प्रॉब्लम इन आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज दैट यू आर नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड योर ब्रांड नेम और गुडविल इन द बैलेंस शीट। आपको गुडविल तभी अलाउड है रिकॉर्ड करना जब आप एचयूएल के जैसे कंपनी अक्वायर करते हो। व्हेन एचयूएल अक्वायर्ड जीएसके कंज्यूमर एंड दे ओवरपेड, तभी यू कैन रिकॉर्ड गुडविल इन योर बुक्स। बट ओवर योर, मैगी बिका नहीं है ना अभी तक, मैगी उनका ही कंपनी है। करेक्ट? मैगी इज अ ब्रांड ऑफ नेस्ले। तो आज मैगी का जो रियल वैल्यू है, द रियल वैल्यू ऑफ मैगी वुड बी हाउ मच? लेट्स से 15,000 करोड़, जो भी है, रैंडम नंबर है टेक, पर उसका असेट वैल्यू इज जस्ट 2 करोड़।
करेक्ट। तो कैन आई से इन सच कंपनी नेस्ले वगैरह जो बड़े कंपनीज है, उसमें असेट इज एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड, अंडर रिपोर्टेड है। आपको लगता है ये जब कंपनी बिकेगा, लेट्स से दे प्लान टू सेल मैगी, विल दे सेल इट एट 2 करोड़? No, sir. Not sell. So can I say that assets are underreported? Yes, sir. दिस इज द मेजर इशू। तो ये असेट्स बहुत अंडर रिपोर्टेड है, इसीलिए आपको लगता है कि आपका असेट टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स है। वरना आपको लगता है 2 टाइम्स असेट टर्नओवर बहुत पॉसिबल है मैन्युफैक्चरिंग ऐसे कंपनीज में? टू टाइम्स No, असेट sir. टर्न 2 टाइम्स असेट टर्नओवर मतलब क्या होता है गाइस? अगर आपके पास 10,000 करोड़ के असेट्स है, उसको यूज करके आप एक ही साल में 20,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करो, इज इट पॉसिबल? डबल। जितना असेट्स है उसका डबल। सर्विस कंपनीज वगैरह में पॉसिबल है, ट्रेडिंग कंपनीज, बट दे हैव वेरी लेस नंबर ऑफ असेट्स। पर ये तो एक्चुअल में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे नूडल्स वगैरह, समझा? सो दिस असेट का वैल्यू इज डाउन बिकॉज सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। यस, तो ये ट्रू वैल्यू नहीं है असेट्स का। दिस इज नॉट द ट्रू वैल्यू ऑफ असेट्स। सो गाइस, नेक्स्ट टाइम समवन टेल्स यू ना कि भाई एचयूएल का रिटर्न ऑन इक्विटी 80 to 100%, you have to tell him, no bro, that 80 10 100% is actually misleading figure। वो फिगर मिसलीडिंग फिगर, वो हमें देखना नहीं चाहिए, समझा? एवरीवन, यस, that 80 100% actually has no meaning। why? Because asset grossly undervalued है, equity grossly undervalued। नील सर, एक ही सेकंड ब्रो, तो लेट मी ओके, लेट मी कंप्लीट द होल डिस्कशन। एक ही सेकंड ब्रो, सॉरी टू कट यू। व्हाट ऑल वी डिस्कस्ड ना अभी तक आरओई, बहुत इतने एग्जांपल्स लिए, कंफ्यूजिंग हो गया बहुत। तो मैंने एक समरी टेबल बनाया। there's a summary table for all of you। yes, just focus on this। and I feel जितने मेरे हिसाब से केसेस हो सकते हैं, सब मैंने एक टेबल में, एक चार्ट में कवर कर लिया। जस्ट वन चार्ट will help you to navigate through return on equity of any company। so please focus on this chart। you check return on equity of any company, कोई भी कंपनी का आरओई चेक करो। 3 कैटेगरीज में हो सकता है, या तो इट इज टू लो, 10% से कम है, या तो इट इज टू हाई मतलब 15% ज्यादा है, विच इज गुड, या इट इज एक्सट्रीमली हाई, वेरी 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 हाई मतलब 50% या उससे ज्यादा। 3 कैटेगरीज में एनी कंपनी कैन फॉलो इनटू 3 कैटेगरीज। बिलो 10 नॉट गुड, अबव 15 गुड, वेरी वेरी हाई अबव 50। तो 3 कैटेगरीज में यू डिवाइड द कंपनीज। लेट्स से वी आर रिसर्चिंग अबाउट अ कंपनी जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी इज बिलो 10, तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इट इज नॉट अ गुड कंपनी, बैड कंपनी। 10% से कम मतलब एफडी में डाल डाल दो, बेटर है। तो जनरली बैड है, बट इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू वन टाइम लॉस ड्यू टू राइट ऑफ असेट्स। अगर आपका कोई असेट है, चल नहीं रहा, उसका राइट ऑफ कर दिया, तो अचानक से आपका प्रॉफिट बहुत गिर जाता है, तो इट माइट बी अ वन टाइम थिंग, तो वो चेक कर लो। जनरली बैड, बट ओनली चेक वन थिंग कि इट इज नॉट ड्यू टू वन टाइम थिंग। जैसे टाटा मोटर्स का आप देखोगे, मार्च 2021 में एक वन टाइम लॉस हुआ था उनको, तो उनका आरओई बहुत गिर गया था, बट दैट वाज अ वन टाइम। लेट्स से यू आर एनालाइजिंग अ कंपनी जिसका आरओई इज अबाउ 15%, जनरली इट इज गुड, बट चेक वन थिंग कि वो बोरोइंग्स की वजह से नहीं हो। वो हमने एग्जांपल देखा, राइट? कंपनी लोन बढ़ा रहा है, इसके लिए आरओई इज हाई, अबाउ 15% जनरली गुड, बट एक बार चेक कर लो, इट शुडंट बी ड्यू टू इंक्रीज बोरोइंग्स। एंड इफ द रिटर्न ऑन इक्विटी इज अबाउ 50%, तो गाइस इट इज एन इल्यूजन। दिस जनरली हैपेंस इन कंज्यूमर एंड आईटी कंपनीज, कंज्यूमर कंपनी जैसे नेस्ले वगैरह, आईटी कंपनीज टीसीएस वगैरह। एग्जाम्पल प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी, कोलगेट, टीसीएस, ब्रिटानिया। यस, such high return on equity 50% or more is due to accounting issue and distortions, goodwill वाला thing, so it is meaningless, so you can ignore the return on equity in such cases। आरओई एक अच्छा मेट्रिक नहीं है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है? तो आई फील ये एक चार्ट जो है, आई हैव समराइज्ड एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड, सो आपको नेविगेट करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? यहां तक एवरीवन्स क्लियर? यस सर। Yes, sir. एंड नाउ ये जो गाइस, I take you to the index, just a second, we have to wrap up before 12, but nevertheless, okay, we will keep our discussion only to the fourth point। let's not get in the 5 point, वैसे भी वो कुछ different ही zone में चला जाएगा। We understood return on equity, we understood DuPont, we did few case studies and ended with a summary।
Now let me pack everything and show you a prompt that you can use. Okay, I'll show you a prompt that you can use to summarize everything that we have studied so far. ठीक है, तो आपको करना क्या अभी? I am showing you a prompt. एक second. So fourth and the last part of our discussion for today's session will be you use AI to decode. Okay, so I'll give you a prompt. This is the prompt on your screen. Please, everyone, please pay attention to this. Just a second. You are a world-class financial analyst with deep expertise in equity research and financial statement analysis. आपको करना क्या है? उनको हमने टास्क भी दे दिया. Perform a detailed DuPont analysis of return on equity using only the consolidated financial statement, and we have to provide the screener का link. Focus on financial years from FY21 to FY25. What you must do? उनको क्या बोल दिया हमने? आपको ना, मैंने स्टार्टिंग में बहुत गलती किया था. I used to use prompts for DuPont analysis. पर क्या करते हैं वो हमेशा ना फॉर्मूला अलग अलग चेंज करते रहते हैं. AI keeps changing the formula because sometimes they use average, sometimes they don't, etc. तो मैंने क्या कर दिया, you have to give the formulas also to the AI. So फिर standardize हो जाएगा. So break down the ROE. उनको बोल दो net profit margin ये है, asset turnover ये है, equity multiplier ये है. फॉर्मूला भी दे दिया, ROE का फॉर्मूला भी दे दिया. Now you have to explain in simple terms as if you're teaching a 15-year-old with no background in finance. So if you shouldn't, but if you forget everything that we discussed in today's class, still if you just use this prompt, they will exactly explain you DuPont क्या होता है वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में. मतलब अगर लेवरेज बढ़ा उसका क्या मीनिंग है, बोरोइंग्स बढ़ा है या इक्विटी कम हुआ है, वो सब आपको वो बिजनेस टर्म्स में समझा देगा, मतलब रियल रियल वर्ल्ड में. एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स एंड द की ड्राइवर्स, एंड देन AI विल गिव यू समरी कि पोटेंशियल इन्वेस्टर के लिए इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, फिर रिस्ट्रिक्शंस डाल दिया. डोंट यूज स्टैंडअलोन डेटा, ऑलवेज कंसोलिडेटेड यूज करना है. ठीक है, तो कोई अजम्पशन नहीं लेना चाहिए अपना AI, एंड नो फॉरवर्ड लुकिंग नथिंग. करेक्ट, और ये आउटपुट का फॉर्मेट भी डाल दिया मैंने. सो इफ यू जस्ट यूज दिस प्रॉम्प्ट, ओके, आप अगर ये सब प्रॉम्प्ट यूज कर दोगे तो इट शुड बी अ वेरी इजी थिंग फॉर अस. एक काम करता हूँ मैं, आई विल क्विकली शो दिस टू यू. आर यू गाइस इंटरेस्टेड? शुड बी यूज दिस प्रैक्टिकली? यस सर। यस. sir. एक कंपनी लेते हैं, जो भी माइंड में आ रहा है, मेरे माइंड में बर्जर पेंट्स आ रहा है अभी. बर्जर पेंट्स, मैंने क्या किया, यू जस्ट सर्च द कंपनी, फिर यहाँ पे ऊपर ना ऐसा आ जाता है उसका लिंक, तो लिंक को मैंने कॉपी कर दिया. आई जस्ट Yes, डिड sir. ऑन परप्लेक्सिटी. यस अभी सर। क्या हमें यस आंसर दे दिया, बर्जर पेंट्स का प्रॉपर ड्यूपॉन्ट ब्रेकडाउन का टेबल दे दिया हमें. देखो ROE 22, 22, 19, 21, 19%, समवॉट स्टेबल. अभी आप देखो उसका ये नेट प्रॉफिट मार्जिन, असेट टर्नओवर रेशियो, ये परसेंटेज में दिया, एक्चुअली टाइम्स में होना चाहिए. सो इन जस्ट राइट उनको एक फॉलोअप दे दो. ये 1.15, 1.22 होता है, परसेंटेज में नहीं होता ये. सेम इक्विटी मल्टीप्लायर, ओनली दिस शुड बी इन परसेंटेज. ठीक है. Now, net profit margin shows how much profit Berger Paints keeps from every 100 rupees of sales. आपको ना रिवाइज भी करवा देता है प्रॉफिट मार्जिन का मीनिंग क्या है वगैरह. देन यू कैन सी द की ट्रेंड्स के ड्रॉप्ड इन FY23, देन रिकवर्ड. असेट टर्नओवर का ये हो गया, इक्विटी मल्टीप्लायर. देन कलर कोडेड इनसाइट्स भी दे रहा है, इट फेल इन दिस, इम्प्रूव्ड. ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, और ये फाइनल की इनसाइट्स है. Is strong sales profits keep ROE high. Any margin squeeze impacts the returns. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, you can use this on chat GPT also. See, आपका सोर्स मैटर नहीं करता. ठीक है, द डेटा इज कैन बी एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल वहां पे अगर वो स्क्रीनशॉट मांग रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट दे दो चैट जीपीटी को. इफ दे आर आस्किंग फॉर लेट्स से, बिकॉज आई हैव यूज्ड दिस फॉर मोर देन 15 to 20 कंपनीज नाउ. पहली बार ऐसा चैट जीपीटी में आया. इनिशियली आई यूज्ड टू पुट स्क्रीनशॉट्स ओनली, फिर आई अंडरस्टूड लिंक भी वर्क कर रहा. स्क्रीनशॉट में क्या हो जाएगा कि आप जो जो स्क्रीनशॉट डालेगा उतना ही डेटा पिक करेगा. लिंक डालते हो तो एवरीथिंग ऑन स्क्रीन दे विल पिक. तो लिंक शुड आइडियली वर्क, बट नेवरदलेस कभी कभी हेलुसिनेट करता रहता है, डजंट मैटर. तो यू कैन यूज परप्लेक्सिटी, यू कैन यूज चैट जीपीटी, यू कैन यूज को पायलट और जेमिनाई, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू.
द ओनली थिंग इज ये प्रॉम्प्ट आप यूज करते रहो, द मोर यू यूज इट ना, फिर आप उसको खुद का पर्सनलाइज्ड बना दो. This prompt works for me, but let's say you want some extra info. You want it to be the, आपको अगर graphical way से समझना, तो you add कि I need a graphical way. You use AI to help your analysis, जिससे आपको थोड़ा सा सेंस बढ़ेगा इसका. ठीक है? So with this, I think we have discussed everything that is there to be discussed in DuPont. Yes, I hope you guys had a lot of fun. Yes, Okay. sir. And the last thing that I want you to go through is this quote from Benjamin Graham. It is not sufficient to find companies that are doing well. Yes, there are a lot of good businesses, a lot of good companies today. You must find companies that are doing well with your money. In a way, they're telling, he's indirectly or directly hinting, return on equity check करो. यस, अच्छे कंपनीज है, बहुत अच्छे कंपनीज है, बट इफ दे नॉट डूइंग वेल विथ योर मनी, शेयर होल्डर के पैसों से वो कुछ अच्छा नहीं कर रहा, तो देन सच अ कंपनी इज नॉट वर्थ आवर इन्वेस्टमेंट. यस, सो आई होप यू गाइस हैड फन. We'll wrap up our session today over here. I wanted to keep it only 1 hour because feedback from my last time था कि let's keep it just 1 hour to focus रहना, but nevertheless it went on for a longer session. Anyways, thanks a lot. Thank you for attending.